Hello, good evening, everyone. Good evening. So, first of all, please confirm the audio, video, and the screen sharing. Everything is fine for everyone. Okay, okay, done. Thank you. Okay, so I suppose that every one of you must be doing the practice with the help of the books which you have received from the head office of Shastra. And you must have started attempting the test on the online portal of EduShastra for your topics which you have completed, right? So, my suggestion for everyone, keep revising, keep testing yourself so that you can just develop the understanding of the concepts and the exposure to the different varieties of the questions, right? Okay. So now moving on with this topic, the profit, loss, and discount. Very practical topic. Every day we are going to market to purchase something, some product, some maybe like metro ticket, train ticket, anything like a bus ticket. So we are purchasing something every day, right? Multiple times during the day. So we are calculating what is my profit, what is my loss, what is the discount I'll be getting. And this is not in terms of money, right? Profit, loss, and discount is not only in terms of money. Money is the one aspect of calculating this concept. But you always try to calculate that, suppose if you do, say, this project, what is the benefit, what are the learning for you? Right, if you do this course, what are the profit, what are the losses for you? So in every aspect of the life we are calculating, we are identifying the profit and losses for a different activities and the actions which we are doing, right? Okay, so now, so starting with this part, the profit, loss, and discount, I suggest everyone to participate in the session, right? And to give me the answers. You can just unmute yourself to explain your logic, your concepts. Okay. And my suggestion that everyone should participate so that we have a good understanding and the good learning, right? As much as we discuss, we will be generating a different type of concepts, the different type of understandings. Okay. Okay. So, starting with the say the easier part, the profit, loss, and discount. So, can you explain the definition or maybe these terms? How will you understand? How will you explain these terms, profit, loss, and discount? First, profit. What is profit? सर Yeah. Good evening. Good evening. Yes. सर प्रॉफिट मतलब जैसे हमने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और उसको 120 रुपए में बेच दिया तो हमने Mhm, फिर 20% प्रॉफिट बना दिया उस चीज के ऊपर इट्स कॉल्ड right. प्रॉफिट Yes. 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 Right. Okay. And what is loss? जैसे हमने 100 रुपए की चीज खरीदी और 80 में बेच दी तो हमारा 20% लॉस हो गया डिस्काउंट का मतलब ये है कि जैसे 100 रुपए में चीज खरीदी 120 एमआरपी है और हमने कह दिया कि हम इसके ऊपर 10% डिस्काउंट देंगे तो फिर हम उस पर डिस्काउंट देंगे 12 रुपए का फिर उसके अंदर हम 8% प्रॉफिट बनाएंगे वो 12 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा Yeah. Right. So in this, in the concept of the profit, loss, and discount, we are having a different terminology. Like as every concept, every aspect is having a some standard nomenclature, standard terms. So in this also, we are having a some standard terminology, right? And moving with this part, so first understanding the profit, loss, and discount. So profit and loss is used to determine the price of a commodity in the market and understand how profitable a business is. Right. So as Yash was talking about, okay, if you're purchasing something and then selling the product, so the price may be more, price may be less, right? So depending on my activity, I'll be earning say some profit or maybe I'm suffering with some loss. Okay, every product has a cost price. So see, this is a one term cost price. And what is cost price? The price at which you are
purchasing the product, or any one person, maybe shopkeeper or someone purchasing the product. And then there is a selling price. So selling price is what? Someone is selling at this value, the selling price. So this can be more than the cost price, this can be less than the cost price, right? So based on the values of these prices, we can calculate the profit and loss as per like values. Okay, so these are the things. Now, when we're talking about this, so there are some terms, right? As I was talking about. So just understand these terms first. Yeah. What is profit? Profit is gained by selling a product for more than its cost price. So here the price is more than the cost price. Then we are having profit. And if I say loss, so the price is the less than its cost price. Then we are suffering with a loss. What is cost price? The price at which we are purchasing the product, right? The amount, the value which we are paying to have a some product or maybe some services. And now there are some fixed costs. So fixed costs are basically constant, right? So when you're going to the market, you're purchasing some product, right? And variable cost, this is depending on some other product. So taking a one example for this fixed cost and variable cost, suppose you are giving a party, right? You are organizing a party, maybe some birthday or something, right? And you're booking some venue, some hotel, vagara, for the party purpose, right? So there is some fixed cost, right? The venue price, the lighting, the decoration. So all these are the fixed price, right? And what is variable price? Variable price is dependent on the number of guests who are coming in your party. Maybe 100 guests, maybe 200 guests, maybe 500 guests, right? So depending on the number of guests, the value, the cost differ, right? So this is what the variable price, right? Say for example, you are going somewhere by car, right? So when you're using a car, there is some fixed cost for the wear and tear of the car, right? If you're running a car, so the tires, the engine oil, everything, all these are some fixed costs, right? Depending on per kilometer. Now, how much kilometer you are traveling will calculate your fuel cost, right? The consumption of the petrol or the gas or whatever, right? So this is what my variable cost. So fixed cost and variable cost, two things are different, right? Okay. Now we are having a selling price. So what is selling price? The price at which we are selling the product, right? So this price can be more than the cost price or maybe less than the cost price. Mark price is what? The price which is printed over the product, right? Which is labeled, the printed over the product. When you're purchasing a bread, when you're purchasing some medicines, right? When you're purchasing any product, maybe some juice, maybe some biscuits, right? So you always look for the packet. Okay, so this biscuit packet is priced at this much, right? So this is what the printed price of the product. Now, what is discount? So discount is what? The printed price, the mark price minus the selling price. Right? Whatever the selling price. So selling price can be equal to the mark price or selling price can be less than the mark price. And then we are having a discount percentage. Right? Okay. So these are the some formulae, but before this, as we are having all these terms, so we can make a some structure, right? And in this structure, we can identify what is the relation among all these terms which we have just discussed. Mark price, profit, discount, cost price, selling price, loss, right? So if I understand the relationship among all these terms, it is very easy to calculate the percentage of different value, right? Okay, so see this.
Whenever you are starting a say some business, or whenever you are doing a some job, anything, right? Whatever. First thing is what? The cost, right? So there is a some CP, cost price, right? So cost price may be the raw material, electricity, storage, machinery, salaries, transportation, advertising, right? So all these are there in the cost. Done. Now you're doing a business, so you want to earn some profit, like you want to earn some livelihood. So what you do, you are calculating this cost and then increasing this cost price up to a certain extent, right? Depending on the product or the industry in which you are operating. Maybe like electronic products, maybe like food items, right? Clothing, so whatever you are operating, depending on the product or the industry, you are raising this cost price. And now you are putting a price tag over the product. And we are calling this as what? Marked price or list price, right? Marked price, the price which is printed over the product. As I just taken an example for the biscuits, maybe toothpaste, maybe any item, right? Any item when you're going to purchase, you just pick a product and you see, okay, this is price at this much. Okay, I want this. Now, so this is marked price. Now, if you are going to purchase some vehicle, right? Car, bike, right? So when you're going in a showroom, there is a no price tag over the bike or a scooty or the car, right? You go in the showroom and you just ask the shopkeeper, the salesperson, okay, this scooty is costing what price, how much, right? So they are showing you a list, right? So they are saying, okay, sir, starting price is this much. Now, if you are going for the first variant, so you will be having this much. If you add these facility, these features, so the price will be this much. So there is like some variations, right? There are some variation in the price. So there is a no fixed price for vehicles, for a scooty, etc. Right? So this is called as what? List price. Right? Okay, yes, okay. So I'll use Hindi also in the Hindi conversation, right? No worries. है ना? तो जब भी हम किसी भी शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पे जब हम किसी व्हीकल को चेक करते हैं, स्कूटी, बाइक, कार वगैरह किसी को भी चेक करते हैं, तो वहाँ पे ना उनके ऊपर प्राइस टैग नहीं होता है, वहाँ पे सेल्समैन के पास में एक लिस्ट होती है। कैसे, ये देखिए, ये इतना वेरिएंट है, इसको आप टॉप लेंगे तो ना ये प्राइस आएगा। आप इसमें विंडशील्ड कर लेंगे, आप इसमें ये कर लेंगे, ये कर लेंगे तो ये प्राइस हो जाएगा। सो दीज आर ऑल लिस्ट प्राइस, राइट? देयर इज अ नो फिक्स प्राइस फॉर द कार, दिस ऑल डिपेंड ऑन द फीचर्स। तो वहां पे हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस, बट दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने प्राइस में वो प्रोडक्ट मेरे लिए अवेलेबल है ना? Now, when you are going at a some fair price shop, जहाँ पे नॉर्मली आप देखते हैं लिखा होता है नो बार्गेन, नो डिस्काउंट, कई बार ऐसी शॉप्स पे लिखा होता है, राइट? तो जितना भी शॉपकीपर ने प्राइस टैग लगाया हुआ है, आपको उसी प्राइस पे परचेज करना है, राइट? वट एवर इज द प्रिंटेड प्राइस। सो दिस मार्क प्राइस इज कॉल्ड नाउ एज व्हाट? सेलिंग प्राइस, है ना? तो जो भी प्रिंटेड प्राइस है उसी पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा, वो मेरा सेलिंग प्राइस बन जाएगा, राइट? बट कई बार क्या होता है, आप शॉप में जाते हो, आपने बोला कि अच्छा मेरे को तो 5 पीसेस चाहिए, मेरे को इतना सामान चाहिए, ये चाहिए, आई वांट दिस मच, टेल मी व्हाट इज द डिस्काउंट यू आर गिविंग, राइट? तो यू ट्राई टू बार्गेन विद द शॉपकीपर। तो कई बार हम क्या करते हैं, जो भी प्रिंटेड प्राइस होता है हम उस पर बार्गेन करते हैं एंड वी आर एबल टू रिड्यूस द प्राइस, राइट? तो मार्क प्राइस यहाँ पे था, आपने थोड़ा सा बार्गेन किया और यहाँ तक आपने इसको लोअर डाउन किया, एंड नाउ दिस इज व्हाट? सेलिंग प्राइस। ओके, सो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्काउंट, right? And this difference is called as what? Profit, right?
So this is my profit. So what is profit? Selling price minus cost price, राइट? ये हो गया. अब कई बार क्या होता है कि हमें जो प्राइस है वो इतना कम करना पड़ जाता है शॉपकीपर को कि वो कॉस्ट प्राइस से भी नीचे चला आता है, राइट? टेक इट फॉर एग्जांपल, यू आर डीलिंग इन सम फूड प्रोडक्ट, वेजिटेबल, ब्रेड, मिल्क प्रोडक्ट, एक्सेट्रा, राइट? पेरिशेबल प्रोडक्ट. सो there is a timeline, 1 day or 2 day you have to consume the product, otherwise it will go waste. Okay. So if you feel that you're not able to sell, so you try to reduce the price and आप कोशिश करते हो कि वो मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाए, है ना? कई बार क्या होता है, there is some disturbances and you're not able to transfer your product from one city to other. वहां पे बीच में कुछ झगड़ा हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, राइट? तो यू वांट के चलो ऐसा करते हैं कि जितना भी मेरा प्राइस रिकवर हो जाए उतने में हम इसको सेल कर देते हैं, है ना? सो समटाइम्स यू ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट बिलो द कॉस्ट प्राइस. और यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये आपका मार्क प्राइस है, आपने प्राइस इतना कम किया कि वो कॉस्ट प्राइस से भी कम हो जाता है, एंड नाउ दिस इज योर सेलिंग प्राइस, राइट? सो दिस पार्ट is what? My loss, right? And this difference is again called as what? Discount. Done. So on the printed price, right? Printed price के ऊपर आप जो price reduction करते हैं, this everything is called as what? Discount. अब price reduce करने के बाद भी अगर वो cost price से ज्यादा है, profit हो जाएगा. कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, नो प्रॉफिट नो लॉस है. और अगर कॉस्ट प्राइस से कम हो गया तो लॉस है. बट जो भी प्रिंटेड प्राइस है उसके ऊपर जो भी प्राइस रिडक्शन है, दैट इज ऑलवेज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्काउंट, राइट? सो दिस इज अ वन रिलेशनशिप स्ट्रक्चर अमंग ऑल द टर्म्स, राइट? तो अब इसमें जैसे अगर मुझे डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो वो हम किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट के ऊपर, है ना? प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट के ऊपर. बट अगर डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस के ऊपर, है ना? तो यहां से हमें इस स्ट्रक्चर से एक रिलेशनशिप मिल जाता है, एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि जो भी परसेंटेज है उसका बेस वैल्यू क्या है, किस बेस वैल्यू पे हम इसको कैलकुलेट करें, राइट? Then any question, any query till now? नो सर. Okay, 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 Shia, okay, yes. Okay. So these are the different terms, right? So this is just a summary of the formulae. So profit or gain is what? Selling price minus cost price. Loss is what? Cost price minus selling price. Profit percentage is what? Profit divided by cost price, and loss is what? Loss percentage, loss divided by cost price, right? So this is profit and loss. And these are the some expressive formulae, right? But इसमें my suggestion is कि do not just memorize, right? Because formulae ना ऐसा है कि आप मेमोराइज करोगे तो आप कंफ्यूजन में होगे कि मेरे को कहाँ पे क्या अप्लाई करना है, राइट? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है. प्रॉफिट लॉस करना है तो हम कॉस्ट प्राइस का बेस लेंगे. डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? प्रिंट प्राइस या मार्क प्राइस का बेस लेंगे, है ना? एंड देन सिंपली कैलकुलेट, राइट? सो these are the some formulas, right? Now before this, I suppose you must have encountered some terms which are called as profit margin percent, and other term is loss margin percent. What is this? ये क्या है? प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट तो हमने देखा, है ना?
बट कई बार आपने ये वाले टर्म्स भी देखे होंगे क्वेश्चंस में, बुक में, प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज इतना है, लॉस मार्जिन परसेंटेज इतना है, तो व्हाट इज दिस, ये क्या है? You can unmute yourself, you can discuss your idea, your understanding for these terms. Sir, I didn't get the question. Can you please repeat it again? क्वेश्चन इज कि जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि हम प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट कैलकुलेट करते हैं, राइट? तो वो तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। ओके, बट कई बार आपने ये वाले टर्म भी देखे होंगे क्वेश्चंस में, बुक्स में, कि प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज दिया हुआ है, लॉस मार्जिन परसेंटेज दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, व्हाट इज दिस? Some maybe the like rate, I mean, of discount, like up till that much percentage only, or up till that much value only, the discount would be given, because this would be the minimum profit that we हम्म। want as a हम्म। shopkeeper. हम्म। नहीं, नीति सी, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि हाँ, अगर ऐसा होता कि हम मिनिमम डिसाइड कर लें कि मैं इतना ही डिस्काउंट दूंगा, राइट, तो फिर तो हमारे पास जो लॉस का कॉन्सेप्ट है वो होगा ही नहीं, राइट? तो फिर तो आप कभी भी जो है लॉस में प्रोडक्ट सेल ही नहीं करोगे। गेटिंग माई पॉइंट? आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मैं जो है ये मेरे प्रोडक्ट है और मैंने इतना कॉस्ट लिया, मैंने ये सेल प्राइस रखा और मैं इतना परसेंटेज तक डिस्काउंट दूंगा, तो फिर तो कभी आप ऐसा कैलकुलेट करोगे ही नहीं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो लॉस में जाए, राइट? बिकॉज बीइंग अ सेल्स पर्सन, बीइंग अ शॉपकीपर, बिजनेसमैन, मैं ये क्यों चाहूंगा कि मेरे को लॉस हो, राइट नियति? Yes, sir. राइट। Okay, Saurabh is saying net revenue and net expenses. No, Saurabh, no. See, net revenue and net expenses, जैसे अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, so we are making a some financial document, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका मे बी आप जो भी टाइम लाइन लेते हैं, मंथली, 6 मंथली, ईयरली, नॉर्मली तो इंडिया में जो टाइम लाइन है वो ईयरली है, तो ईयरली बेसिस पे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, राइट? We are approaching for the financial year end on the 31st of March. तो उस पूरे टाइम लाइन में आप ये चेक करते हैं कि आपने टोटल कितना अर्निंग किया, टोटल कितना एक्सपेंसेस किया, तो वहां से आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है, राइट? ओके। ओके, राइट शंकर, राइट, राइट, नो वरीज, नो। Tanya, no. Tanya, how, like, you're saying net margin divided by total revenue? So I would understand what is margin. Can you explain, Tanya, what is margin? So yes, it will be the net revenue. Actually, I wanted to say revenue instead of margin. It would be net Mm-hmm. revenue, cutting off all the expenses from the and additional expenses from the selling price, the profit that we get Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, after okay, tax. okay, right. So basically, all of you are talking about for what we are calculating the profit or the loss, right? Whatever you have explained, all of you. So this is particularly what, that is profit and loss. If there is just some extra expenses, if there is just some extra revenue, so all these are added up in the profit and loss account, right? Suppose if there is just say, some theft in my showroom, right? And I lost some of my product. So these are what added to my cost, and this will be there as loss, right? So all these things are lost. Now understand what is margin. Okay, so suppose you are going in a one shop and you want to purchase a one t-shirt, right? And
the shopkeeper is saying, okay, so this t-shirt is costing and the selling price for this t-shirt is 500 rupees, right? And you bought the t-shirt in a 500 rupees, right? Now, you do not know what is the profit the shopkeeper is earning on this t-shirt which you have purchased in 500 rupees, right? Now, we Indians have a general tendency that when we are purchasing some product, so we show in the family, in the friends, etc. Right? And okay, so see, I bought this T-shirt, I bought this trouser, I bought this, I bought that, right? And we discuss with the family members and friends. है ना? And then when we are discussing, so there is a one very common statement हम बात करते हैं कि ये जो टी शर्ट मैंने लिया है 500 रुपीज का, इस पर शॉपकीपर ने मेरे से जरूर 50-60 रुपए तो अर्न किए होंगे प्रॉफिट के, है ना? दिस इज अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट इन इंडिया वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? सो वी ऑलवेज से कि द शॉपकीपर मस्ट हैव अर्न रुपीज 50, 60, 70 from me on selling this product to me in 500 rupees, right? So this is what? This is my estimated guess for the profit for the shopkeeper. है ना? So if I am purchasing a product for 500 rupees and we are using a number something like 50, 60 rupees, okay, for the profit part. So we are estimating this on the what? Selling price of the shopkeeper, right? Selling price of the shopkeeper. Okay. And if I use the term 50, 60 on a 500, so we are estimating something like 10 or 11% of profit. This is a normal profit margin in the India, right? So on a product, this is a normal. इतना रहता है products के ऊपर. Okay. So now, what is the difference? So when you are calculating profit or loss, so these are always calculated over the cost price, right? Cost price. And when you are calculating profit margin on the loss margin, so these are calculated over what? Profit divided by selling price into 100, right? And this is loss divided by selling price into 100. So profit and loss are always calculated over the cost price, and profit margin and loss margin are always calculated over the selling price. Right. So all the documents, all the papers which are prepared by the organization, right? Uh, Balance sheet, profit and loss account, right? Everything are prepared on the basis of the cost price, right? But we have some external agencies, right? Finance ministry and etc., right? So sometimes you must have seen that the finance ministry, the custom excise and different departments which are collecting the tax on behalf of the government, so they are giving a notice to different department. Okay, so you this company, this organization has paid the less tax, or say this, they are not paying the proper tax. How? How they are calculating? So they are looking for the market, right? In the market, the company's operation. So if the company is operating very good, right? To big sale, big product, wide range of product, right? And company is showing, okay, my tax liability is this much. So this is what profit margin and loss margin are the estimated values, right? Some external organization, depending on what? Sale value. They are calculating that you should pay this much of tax based on your profit or loss, right? Then the organization is giving them the actual calculation in the form of the profit loss account and the balance sheet, and showing that okay, my actual profit, my actual loss is this much based on the cost price, right? So this is the difference between the profit percent, loss percent, and the profit margin percent and the loss margin percent. So margin is always calculated over the selling price, and actual profit and loss are always calculated over the cost price, right? Okay. Sir, Mm-hmm.
Sir, profit margin percentage and profit percentage both cannot be present at the same time, right? I mean, uh, like नो, दे कैन बी प्रेजेंट, दे कैन बी प्रेजेंट। देखो यहाँ पे अभी हमने किया ना ये वाला पार्ट, ये ये जो डायग्राम मैंने शो किया था अभी रिलेशनशिप, तो व्हाट आई सेड हियर कि आप जब डिस्काउंट कर रहे हैं, है ना, जब आप किसी भी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट कर रहे हैं, तो अगर वो डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, आपका प्रॉफिट होगा। अगर वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है, देन नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर वो कॉस्ट प्राइस से कम है, तो आपका लॉस हो गया, है ना। तो आप कह रहे हो कि वो बराबर नहीं हो सकते। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट के ऊपर, एंड प्रॉफिट मार्जिन लॉस मार्जिन हम कैलकुलेट करते हैं सेलिंग प्राइस के ऊपर। नाउ सपोज आपने किसी प्रोडक्ट को यूज किया एंड देन यू आर गिविंग अ डिस्काउंट, राइट। और डिस्काउंट करके जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के जस्ट इक्वल हो गया। तो ना कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दोनों बराबर हो गए, है ना। और प्रॉफिट क्या हो गया आपका, बिकॉज जब आपने जिस कॉस्ट प्राइस पे लिया उसी कॉस्ट से उसी पे आप सेल कर रहे हो, तो आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा है, ना ही आपको लॉस हो रहा है ना। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो पार्ट है दोनों सेम हो जाते हैं, राइट। oh, okay, sir. Sir, and like profit margin percentage are basically the bargain less price. You can say that. नहीं, हाँ मतलब कह सकते हो उसमें तो बार्गेनिंग है। जैसे अब मैं देख रहा हूँ कि अच्छा देखो कि ये वाली कार मार्केट पे बहुत सेल हो रही है, कोई पर्टिकुलर ब्रांड है बहुत सेल हो रहा है, या कोई पर्टिकुलर जो बिस्किट है वो बहुत ज्यादा सेल हो रहा है ना। तो आई कैन से कि अरे उसका तो सेल जो है बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कई बार हम बात करते हैं ना कि अपने आसपास के शॉप में, कि देखो वो वाला तो ग्रोसरी शॉप जो है बहुत अच्छी सेल कर रहा है, उस पे तो सारा दिन जो है लोगों का रश रहता है ना। तो ये हम कैसे करते हैं कि हम देखते हैं उसका सेल कितना हो रहा है ना। सो प्रॉफिट मार्जिन एंड लॉस मार्जिन आर कैलकुलेटेड ओवर द सेल वैल्यू, राइट। गॉट इट। Okay, Preeti, so what is your understanding with the variable cost, Preeti? Hello, can you unmute yourself and tell me what is your understanding with the variable cost? I don't know. Okay. ओके, सो टेक एग्जाम्पल लाइक जैसे आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, राइट प्रीति, एंड यू आर कॉलिंग सम ऑफ योर फ्रेंड्स। आपने अपने से 10-15 फ्रेंड्स को कॉल कर दिया कि मेरा बर्थडे है, नाउ एवरीवन शुड कम एंड लाइक ना। अब आपने कॉल तो कर दिया अपने फ्रेंड्स को, आपने बोला उनको कि आप आइए मेरे यहाँ पे, मेरा बर्थडे है ना। तो आपने सपोज 15 फ्रेंड्स को कॉल किया, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपना प्रिपरेशन किया, आपने डेकोरेशन किया, आपने एक वेन्यू एक हॉल बुक कर लिया, राइट। आपने जो है फूड आइटम्स वगैरह सब डिसाइड कर लिए कि फ्रेंड्स 15 फ्रेंड्स आएंगे तो इतना जो है मेरा फूड आइटम कंज्यूम हो जाएगा, है ना। ना, अब क्या हुआ कि जो फ्रेंड्स थे वो मे बी कुछ काम हो गए, है ना। कुछ लोग नहीं आए, उनको कुछ काम हो गया। या क्या हुआ कि जैसे कुछ फ्रेंड काफी दूर से आते हैं, है ना, तो क्या हुआ कि दे आर जस्ट टेकिंग अ सम गार्जियन, उनके साथ में कोई साथ में भी आ गया। तो आपने तो एस्टिमेट किया था कि 15 फ्रेंड्स का है, बट किसी के साथ उनके फादर आ गए, किसी के साथ उनकी सिस्टर आ गई, किसी के साथ उनके ब्रदर आ गए। तो क्या हुआ कि वो 15 से नंबर 20 हो गया। अब आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ना उनको कि नहीं आप लोग बाहर बैठिए, आपको तो नहीं मिलेगा कुछ भी, है ना। सो वी आर नॉट सेइंग लाइक दिस, राइट। सो जो आपका फिक्स पार्ट था कि आपने डेकोरेशन किया, आपने गिफ्ट्स वगैरह सब प्रिपेयर किया, लाइटिंग वाइटिंग वो सब किया, तो दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। आपने पहले से प्रिपरेशन कर दिया ना। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ गेस्ट, आपका जो फूड का कंजम्पशन है वो चेंज हो गया, है ना। सो दिस इज व्हाट योर वेरिएबल कॉस्ट। जैसे हम लोग पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि प्लेट सिस्टम है कि जितने प्लेट्स जो है कंज्यूम हो गए उतना आपको पे करना है। अब गेस्ट ज्यादा आते हैं तो ज्यादा पे करना होगा, गेस्ट कम आते हैं तो कम पे करना होगा। बट जो
एक फिक्स पार्ट है, डेकोरेशन वगैरह वो सब चीजें हैं, प्रिपरेशन है, वो तो रहेगा ही रहेगा, राइट? Okay, गॉट इट? sir. ओके, Okay. ओके। Sir, यस, sir, please can you explain about the loss margin within example? ओके। लॉस मार्जिन, so see, what is margin? Margin is what? Based on selling price, है ना? अब सेलिंग प्राइस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब आप मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ना कस्टमर्स ही नहीं है ना? जैसे कि अगर हम बात करें, थोड़ा सा टाइम पहले जो है, आपने अगर ध्यान दिया होगा न्यूज वगैरह में, तो बीच में ना क्या हुआ था कि जो मैगी है ना, उसमें आ रहा था कि जी कुछ मिलावट है, देयर इज सम एडल्ट्रेशन एंड समथिंग लाइक दिस। तो सब लोगों ने उसको खाना ही बंद कर दिया था, है ना? बट कंपनी तो बना रही थी, कंपनी का तो प्रोडक्शन चल रहा था, मार्केट में शॉप में जो है स्टॉक रखा हुआ है, गोडाउन में स्टॉक रखा हुआ है। अब ये तो फूड प्रोडक्ट है, एक टाइमलाइन रहता है, इसका फिक्स रहता है ना? वो खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है ना? सो दिस इज व्हाट लॉस। अब जो बाहर के ऑर्गेनाइजेशन है, मे बी सम लाइक मिनिस्ट्रीज हैं, कस्टम एक्साइज हैं, जो भी टैक्सेबल अथॉरिटीज हैं, तो दे आर कैलकुलेटिंग कि ये जो प्रोडक्ट है इसका सेल तो नहीं हो रहा है, बहुत कम सेल हो रहा है ना? सो दे आर कैलकुलेटिंग ऑन अ बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस, कि एक मैगी का पैकेट अगर सपोज 20 रुपीज 30 रुपीज का मिलता है, तो इन्होंने तो 1000 पैकेट्स बना लिए, तो इतने रुपीज का हो गया, अब इनका तो सब लॉस हो गया, बिकॉज वो सेल ही नहीं हो रहे हैं, है ना? सो दिस इज व्हाट लॉस मार्जिन परसेंटेज। बट जब कंपनी अपना कैलकुलेट करती है, तो वो कैलकुलेट करती है एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर। सो दैट इज व्हाट एक्चुअल लॉस और द एक्चुअल प्रॉफिट। गेटिंग दिस? Okay, sir. Okay. So this is So profit. I didn't get the last part. Like you said, the company will calculate on the actual cost, but lost margin is about the selling, right? So हाँ, it will be calculated on the selling in itself. नहीं 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 नहीं, मैंने देखो बताया आपको कि जो मार्जिन होता है वो एक्सटर्नल लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप हो, आप जब अपने जहाँ पे आपके सराउंडिंग है, जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं, तो वहां पे ना देखा होगा कि कोई एक जैसे लोकल ग्रोसरी शॉप है या कोई एक नियर बाय शॉप है, उस पे पूरा दिन सारा दिन लोगों का रश रहता है, ये दे दो वो दे दो, है ना, भीड़ रहता है। बट उसी के साथ में एक दूसरा शॉप है, वो सारा दिन खाली बैठा रहता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा अपनी लोकेलिटी में कुछ ऐसे शॉप्स रहते हैं, है ना? तो जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको नहीं पता है ना कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसकी कॉस्टिंग कितनी है। हो सकता है उसकी शॉप का जो रेंट है वो बहुत हाई है ना? हो सकता है कि उसका जो स्टोरेज है वो बहुत ज्यादा हो सकता है कि वो उसके शॉप में जो है कुछ मतलब लॉस हो रहा है, पानी गिर रहा है, उसका जो फूड प्रोडक्ट है वो खराब हो जा रहे हैं, गल जा रहे हैं, सड़ जा रहे हैं, है ना? तो देर आर वेरियस थिंग, बट आप क्या देख रहे हो कि अरे इसकी शॉप पे तो लोगों का रश रहता है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है ना? तो इसकी सेल बहुत ज्यादा होती है। सो दिस मार्जिन इज estimated figure and identified by some external person, right? And actual profit and actual loss are calculated by the owner of the business based on the actual cost. अगर उसके प्रोडक्ट खराब हो रहा है, सड़ रहा है, तो वो क्या है, उसके कॉस्ट में ऐड हो जाता है ना? बट ये चीज हमें या आपको बाहर से नहीं दिखती है कि उसका कितना प्रोडक्ट खराब हो रहा है या सड़ रहा है, राइट? Okay, sir. Thank you. ओके, सो some terms. So Ashna is saying basically margin is assumed. Yes, Ashna, margin is assumed or the estimated value, right? But when we calculate it on CP, so it is real. Absolutely correct. Real and actual. Okay. Right. Okay. So come to us some uh, questions. I just checked some question. Yeah. Okay.
So tell me the answer for this. Price of a commodity increased by 60%. By what percent must a consumer reduce the consumption of a commodity so as to keep the expenditure same? Sir, option D. Okay, okay. Yes, I suggest everyone to give me some answer. Okay, Akshay, okay. So, Akshay, how is your answer? Can you explain? Hello. Yeah, Yeah. yes, yes. Yeah. So it's I use kind of use the formula like Mm-hmm, when it increased by 2/3, so it should be like because this has to be constant, like price and into this should be constant. So if one thing is mm-hmm, increasing, the other should get decreased. So if mm-hmm, it's increasing by 2/3, so other should mm-hmm. be reduced by, yeah, it's decreasing by 3/5, so it should be it if it's increasing by 3/5, so it should decrease Mm-hmm. by 3/8%. Okay, 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 By 18. okay. What do you think? Uh, okay, right. Yes, sure. You want to say something? Sir, I have a trick for this question. I like Mm-hmm, the probability है वो increase 60% से, right? तो 10 से 16 पे हो गई अगर अपन mm-hmm, देखें तो जो mm-hmm, एक्सपेंडिचर है वो 16 से 10 पे आएगा। mm-hmm, जब किसी चीज को हम 16 से 10 पे आएंगे तो 16 के ऊपर 6 का कम हुआ, मतलब 8 पे 3 का, तो 8 पे 1 कम होता है तो 12.5% होता है, तो 8 पे 3 mm-hmm, कम होता है 10.5% हो गया। mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Okay, so before this, I just use. Hmm. Okay, tell me this. A salary is 100% more than B salary, right? Then B salary is how much percent less than A salary? सर 50%। Sure. या Okay, One so fifty Hardik, percent 159, no. Okay, Hardik, okay, Saurabh, okay. So Then 50. Saurabh, how is this your answer? Hello, am I Hello, audible, yes, sir? yes, yes, yes. Sir, if A is earning 100 rupees per month, Mm-hmm, uh, sorry, A salary is 100% more than B. So mm-hmm, if B is earning 100 rupees, then A will be earning 200. mm-hmm, mm-hmm, We have the question here is how much is B salary less than A salary in percentage? mm-hmm, mm-hmm, So uh, we know that B salary is 100 rupees. mm-hmm. We know that A salary is 200. So Okay, 50% of 200 is B salary. okay, okay. So Saurabh, suppose if I say this 100% is not there, if I say this is 50%, now can you tell me how much B salary is less than A salary? 25. नहीं, ये एरर हो जाता है।
How is No, 25? sorry. If Sir, A salary is 33%. 33. if B is earning 100, A salary Uh-huh. will be 150. Uh-huh. Mm-hmm. So we just have to find out what percentage less. Yeah. So Okay. So how much? yeah, 33% less Right. of Yes. 150. Yes. 33%. Right. So, okay. So there are say various methods of finding this, right? But as I discussed earlier, that there are three things. That is, one is a average, one is a ratio, and the other is a percentage. These are the three concepts, three topics which are very helpful and very important with respect to the preparation of examination, any aptitude examination, because they will help you in the arithmetic part, quantitative section, as well as in the data interpretation section to calculate fast. Right. Okay. So first understand this. First, I take for the 100%, right? And I'll take for the 50%. Right? So first say A's salary is 100% more than B's salary. So my base of calculation is what? B's salary. On this we are calculating. So if B's salary is rupees 100. Right? So my A's salary is what? 100% more, which is what? Rupees 200. This is my first statement. Then B's salary is how much less? So in numeric term, how much less? 100 rupees less. So if I want to calculate for the percentage of B, right? So in numeric term, how much less? 100. And now my base of comparison is what? A salary. So this is 200. Calculating percentage, multiplying this, and this is coming out to be 50%. Okay? This is first part. Now, if I want to calculate for the 50%, right? So base salary is what? Rupees 100. Right? So now the A salary is how much? Rupees 150, because this is 50% more. Okay. Calculating the percentage, so this is coming out to be how much? 50 rupees more on a basis of what? A salary, which is 150, multiplying with 100 for percentage and coming out to be 33.33%. So this is what using the formula. Okay? Then this is with the formula. And this can also be calculated with 100R divided by 100 plus R, where R is what? The percentage change. है ना? तो अगर आप फर्स्ट पार्ट के लिए चेक करते हो तो फर्स्ट पार्ट के लिए कितना हो जाएगा ये? दिस इज 100 into 100 divided by 100 plus 100. I suppose this is the same thing. 50% you're getting here. Just check. And if you're doing for this right part, so this is what? This is 100 into 50 divided by what? This is 100 plus 50. And again, check for this, you must be getting how much? 33.33%. Right? Yes? Please confirm. यस सर, बट सर आपको नहीं लगता है सेकंड वाला मेथड जो आपने बताया 100 प्लस आर ये कुछ ज्यादा लेंदी होगा? नहीं, ये देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको यूज करो. आई एम जस्ट गिविंग यू द लॉजिक. अलग अलग मल्टीपल लॉजिक है ना? तो इसमें अभी जो ऑल्टरनेटिव और भी है वो भी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ. सो दिस इज बेसिकली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कोई भी मेथड कैसे काम करता है, कहाँ से वैल्यूज आते हैं, कैसे आता है, राइट? बिकॉज मैथ्स में क्या है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है, राइट? देयर इज नथिंग शॉर्टकट. एवरीथिंग इज अ मैथमेटिकल प्रोसेस. उसमें हम क्या करते हैं कि जब मेरे को कोई कॉन्सेप्ट, मेरे को कोई फॉर्मूला समझ में आता है तो हम उसको जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं, हम उसके कुछ स्टेप्स को कट शॉर्ट कर देते हैं.
और हम बोलते हैं कि ये देखो मैंने तो एक शॉर्टकट बना दिया, है ना। तो अब जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि कोई जादू है या कोई मैजिक है कि ये जो है शॉर्टकट बन गया, आप इससे कर लो सब कुछ हो जाएगा, राइट। मैथमेटिक्स में जो है कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, उसमें सिर्फ ये है कि आप उस कॉन्सेप्ट को कितना अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और कितने स्टेप्स को आप वर्बली मेंटली कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज द शॉर्ट, ओके सर, ओके। बट सर राइट। मेरे को एक ट्रिक के बारे में और मालूम था, शायद आपने पहले वो बताया भी है। नहीं नहीं, वो अभी मैं कर रहा हूँ, वो भी डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ओके सर, वो ओके। भी है ना, वो भी डिस्कस कर रहा हूँ। हम्म। सो यहाँ पे करते हैं। हाँ, ना, अब जैसे अभी हमने इसमें किया कि अगर 100% ज्यादा है तो कितना कम होगा 50%, अगर 50% ज्यादा है तो कितना कम होगा 33.33%, है ना। सो नाउ सी दिस, दिस इज ए, दिस इज बी। अगर ए का सैलरी 100% ज्यादा है तो बी का कितना कम आता है 50%, है ना। अगर बी का सैलरी 50% ज्यादा है तो ये कितना कम आता है 33.33%। अगर ये 33.33% ज्यादा है, राइट, वी आर टेकिंग ए मोर, है ना, और बी लेस, है ना। ये साथ एक, यस इज करेक्ट। तो बी का सैलरी कितना कम आता है, दिस इज 25%। इफ ए इज 25 मोर, तो बी कितना कम आएगा 20, एंड इफ दिस इज 20 मोर, तो ये कितना कम आएगा 16.67% लेस, एंड सो ऑन। अब ये कैसे चल रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बोला है कई बार सेशंस में, कि हमें ना थोड़ा सा होमवर्क करना है जिसमें हमें टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, परसेंटेज, रेसिप्रोकल्स, वो सब याद करने हैं, मेमोराइज करने हैं। तो ये देखो यहाँ पे, अगर ये 1 ज्यादा है तो ये कितना कम है 1/2। अगर ये 1/2 ज्यादा है तो ये कितना कम है 1/3। अगर ये 1/3 ज्यादा है तो ये कितना कम है 1/4। अगर ये 1/4 ज्यादा है तो ये कितना कम है 1/5। अगर ये 1/5 ज्यादा है तो ये कितना कम है 1/6, एंड सो ऑन। सो इफ आई ट्राई टू मेमोराइज दीज रेसिप्रोकल परसेंटेज, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, है ना। और ये आपने, यू मस्ट हैव सीन दिस क्वेश्चन, if the price of petrol is increased by this much of percent, to keep the expenditure same, how much consumption should be reduced, है ना। या आप जब ज्योमेट्री में जाते हो, 2D या 3D में जब जाते हैं, तो वहां पे कि if the length of the rectangle is increased to keep the area constant, how much breadth should be reduced। तो अब वहां पे या तो आप अपना जो है एरिया का फॉर्मूला L/B लगाइए एंड देन कैलकुलेट एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। अदरवाइज यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट एंड देन आइडेंटिफाई, है ना। तो ये वर्बली हो जाता है, फास्ट कैलकुलेट हो जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था अभी यहाँ पे, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, दिस वाज, so price of a commodity increased by 60%. So the one way is you can take a price of commodity, है ना? So yes, Preeti, yes, it's correct. So price of a commodity increased by this, what percentage the consumer must reduce the consumption to keep the expenditure same? What is expenditure? Expenditure is what? Quantity, right? That is consumption, जितना आप consume कर रहे हो, and multiply with price per unit. This is your total expenditure, right? अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर तो आपका कांस्टेंट हो गया, इसको तो आपने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, तो ये आपने इंक्रीज कर दिया। अब प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट है,
तो अगर एक पार्ट इंक्रीज करेगा और आपको ओवरऑल रिजल्ट कांस्टेंट रखना है, तो दूसरा पार्ट आपको डिक्रीज करना ही पड़ेगा, राइट? तभी वो पार्ट कांस्टेंट होगा, है ना? सो दिस मीन्स द क्वांटिटी, द कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस, ये कम करना ही पड़ेगा, है ना? और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, राइट, दिस कॉन्सेप्ट इज वर्किंग एवरीवेयर जहां पे आपके जो वेरिएबल है ना, वो प्रोडक्ट में है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया एरिया, एल इंटू बी प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर क्वांटिटी इंटू प्राइस प्रोडक्ट है ना? टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, राइट? तो जहां भी आपके जो वेरिएबल है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, हर उस जगह पे ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है, राइट? अब एक तो ये कि हम 100 ले लें, 100 हुआ, 60 इंक्रीज किया, फिर कितना कम कितना ज्यादा वो सब हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट? इसके बजाय एज आई टोल्ड यू कि जस्ट ट्राई टू मेमोराइज स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, रेसिप्रोकल परसेंटेज एटसेट्रा। सो दिस इज प्राइस इज इंक्रीज बाय 60%, ये 60% इंक्रीज कर रहा है ना? प्राइस तो इंक्रीज कर रहा है, कंजम्पशन मुझे कम करना है क्योंकि मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है ना? तो अब क्या करें, इसको हम थोड़ा सा फ्रैक्शंस में, रेसिप्रोकल्स में चेंज करें। तो 60% कितना होता है हमारा? 3/5, है ना? जो मैंने पहले एग्जाम पे लिया था, तो वहां पे तो 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5 कंटिन्यूस एक सीक्वेंस चल रहा था। बट यहाँ पे तो कोई सीक्वेंस नहीं है, क्या करें, है ना? तो इसमें क्या करेंगे कि जो आपका न्यूमरेटर है ना, 3, आप इसको एज इट इज रखें, राइट? दिस इज 3, ये रख दिया, सेम रखना है, न्यूमरेटर सेम रखना है ना? एंड जो डिनोमिनेटर आएगा वो क्या होगा, इन दोनों को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप ऐड कर लीजिए और ऐड करके इसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। 3 + 5 कितना होता है? 8। सो 1/8 कितना है मेरा? 12.5, और 3 टाइम्स कितना हो गया मेरा? दिस इज 37.5%। तो मेरा क्वांटिटी कितना रिड्यूस होगा? विच इज 37.5%, राइट? गेटिंग दिस? यस सर। है ना? अब इसमें जो हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। सपोज आप कहते हो कि ये तो जैसे अभी बोला है कि प्राइस इंक्रीज हो गया, है ना? इसको मैं इंक्रीज ना करके बोलता हूँ कि प्राइस आपका 60% डिक्रीज हो गया। तो अगर प्राइस 60% डिक्रीज हो गया तो आप कंजम्पशन इंक्रीज करोगे, बिकॉज आपको एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है ना? तो अब अगर मेरा प्राइस यहाँ पे डिक्रीज हो गया तो ये तो सेम ही है, 3/5, है ना? मेरा क्वांटिटी, कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा, है ना? अब इंक्रीज कितना होगा, आपको क्या करना है, न्यूमरेटर तो 3 सेम रखना है ना? अब इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर, है ना? तो सब्ट्रैक्ट करके 3 - 5 या 5 - 3, न्यूमेरिकल डिफरेंस लेना है ना, नेगेटिव पॉजिटिव का प्रॉब्लम। तो ये कितना हो गया? 2। तो अब कितना क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा मेरा? दिस इज 150%, मेरा क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना? सो दिस इज वर्किंग बोथ द वेज, है ना? तो ये जो हमारा पार्ट है, ये जो लॉजिक है, ये हमें हेल्प करता है जो अरिथमेटिक पार्ट है वहां पे। और सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल होता है वो होता है ज्योमेट्री में, जहाँ पे आप 2D एंड 3D फिगर्स में जो भी टोटल सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, सिलेंडर, कोन, वट जो भी फिगर्स हैं, उन सब में जब भी परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए आता है, तो वहां पे ये वाला जो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, राइट? So I suggest everyone
कि जब भी आप रीड कर रहे हो, है ना, सो ट्राई टू मेमोराइज द स्क्वेयर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स एंड दिस परसेंटेज, और कम से कम 25 तक याद करो, है ना। सारी चीजें जो है वो कम से कम आप 1 से लेके 25 तक आप याद करो, सो डेट कि जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बहुत इजी होगा, है ना। कई बार एग्जाम्स में, कुछ कुछ एग्जाम्स में हमें कैलकुलेटर मिल जाता है, राइट, बट कैलकुलेटर आपको सपोर्ट नहीं करता है, कैलकुलेटर आपकी स्पीड को रिड्यूस ही करता है। बहुत ही ज्यादा ऑड फिगर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो कैलकुलेटर सजेस्टेड है, बट maximum time I do not suggest using the calculator. So Nirupam, I have used this question, right? जैसे अभी मैंने पिछला वाला लॉजिक किया था, आप इसमें ले लो कि प्राइस ऑफ कमोडिटी, राइट, इंक्रीज बाय दिस 60%। तो अगर मेरा एक चीज, है ना, जैसे मैंने ये लिया है कि एक्सपेंडिचर है इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस, है ना। अब क्या हुआ कि क्वांटिटी आपका जो है क्या है, पहले सपोज आप ले लो कि 100 है, 100 क्यूब, है ना, और प्राइस भी कितना है आपका 100 ना। तो ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, है ना। दिस इज, सपोज आप बोलो इसको E1, एक्सपेंडिचर फर्स्ट, इनिशियल, राइट। अब आप E2 कैलकुलेट कर लीजिए, एक्सपेंडिचर लेटर, सेकेंड एक्सपेंडिचर, है ना। तो क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करना है कि कंजम्पशन कितना होगा, राइट। एंड उसके बाद में जब आप इसमें कर रहे हैं प्राइस, तो प्राइस आपका कितना हो जाता है, दिस इज 160p, एंड देन ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ये अब आपका कितना। ना, इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जो हम यूज कर सकते हैं इसमें, ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड हो गया, बिल्कुल प्रॉपर मैथमेटिकल हो गया, है ना। इसके अलावा एक और फॉर्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट आई यूज, ओके, दिस इज ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, right? This one. I'll explain this in a later session, right? So if there is a sum increase, positive; if there is a sum decrease, negative, right? So price is increased, plus 60. Consumption is decreased, minus something B, right? So one is a plus, one is a minus. So product will be minus 60B divided by 100. Done. और ये क्या होना चाहिए, equal to 0, because this is expenditure same. So if you calculate B, so you will find B as what? The same value, that is 37.5%. Right? But what is this formula and where to use, how to use, right? I'll explain this in a later session. This is called as a successive percentage change, right? So what is my suggestion? As I tell you every time, that please do practice for the arithmetic part, because this is a one section where you can score high marks. And if you have analyzed the papers for the previous examinations, so you may find that the arithmetic portion is having the maximum contribution in the examination, right? Percentage, profit and loss, discount, ratio, proportion, time and distance, time and work, simple interest, compound interest, mixture, allegation, right? So all these topics are creating a maximum portion of the examination, right? Okay. So